इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ऑफ अ सेल and what kind of a cell it is. It is hydrogen electrode which is immersed in pure water, then in a solution of pH 3.5 and then in a solution of pH 10.7. So you have to find out the potential of the cell when the hydrogen electrode is immersed in pure water, when it is immersed in a solution of pH 3.5 and when it is immersed in a solution of pH 10.7. Now to solve this problem, the relationship between EMF of the cell and the pH has to be derived. तो कैसे derive करेंगे? This is hydrogen electrode. तो इस पे जो reduction reaction हो रही होगी वो क्या होगी? 2H plus 2 electron forming hydrogen gas. ठीक है? तो hydrogen gas का pressure under standard conditions इसको मान लेते हैं 1 atmosphere. And applying the Nernst equation, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by number of electrons involved is 2 log pressure of hydrogen gas which is 1 atmosphere divided by concentration of H plus ion raised to the power 2. So log 1 by H plus ion concentration raised to the power 2 can be written as minus log H plus ion concentration raised to the power 2, which can also be written as minus 2 log H plus ion concentration, and this is equal to 2 into minus log H plus. और ये जो minus log H plus ion concentration है इसको क्या बोलते हैं? pH. So this entire term is 2 into pH. और E naught cell क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है 0. So this will be equal to E will be equal to minus 0.0591 by 2 into pH. 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी minus 0.0591 into pH. अब अलग अलग pH वैल्यूज गिवन है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट केस जो है वो है प्योर वाटर. प्योर वाटर का pH क्या होता है? प्योर वाटर का pH होता है 7. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा 0.0591 into 7 which is equal to 0.4137 वोल्ट. फिर अगर pH ऑफ सोल्यूशन है 3.5 तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0.0591 into 3.5. तो ये क्या हो जाएगा? 0.2068 वोल्ट. देन pH गिवन है 10.7. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0.0591 into 10.7 which is equal to 0.6324 volt. So from the value of the pH, electrode potential can be calculated. This is minus. All these values are negative. This is negative. अब यहाँ पे pH 3.5 वाले सोल्यूशन को अगर मान लेते हैं E1, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लेट इट बी E1. तो इसकी वैल्यू है माइनस 0.2068 और जिस सोल्यूशन का pH 10.7 है, लेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड बी E2. तो ये हो गया माइनस 0.6324 वोल्ट. नाउ E1 is greater than E2. Reduction potential of the cell, half cell, having pH 3.5 is greater than the reduction potential of the half cell having pH 10.7. तो जिसका reduction potential high होता है that acts as the cathode. Now if a cell is made using the solution of pH 3.5 and pH 10.7, तो ये concentration cell बन जाएगा जिसमें कि concentration of H plus ion in both the half cells is different. जिसका pH ज़्यादा है that is 10.7, उसमें H plus ion concentration कम है. जिसका pH कम है उसका H plus ion concentration ज़्यादा है. तो if the reduction potential value of these two half cells is known, so using these two half cells, if a cell is constructed, then the EMF of the cell will be equal to E cathode minus E anode, that is E1 minus E2. When these two half cells will be
connected to make a cell, then this will behave as a concentration cell, differing in the concentration of H plus ions in both the cells. तो इसका E cell आ जाएगा E1 माइनस E2. तो E1 की वैल्यू क्या है? माइनस 0.2068 माइनस E2. E2 की वैल्यू क्या है? माइनस 0.6324. ठीक है, सॉल्विंग इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.4256 volt. So this is the value of the EMF of the cell. And this cell is a concentration cell. Concentration cell क्यों? Because both the half cells are made up of hydrogen which is immersed in the solution of H plus ion. तो इन दोनों half cells में the difference is in the concentration of H plus ion.